Very good morning, children. Today we are going to start a new chapter, and the chapter is chapter number 6, nouns, which is on page number 18 in your English grammar book. Okay, so open page number 18 and let us see what nouns are. Children, what are nouns? Yes, we have been hearing this word from last 3-4 years, isn't it? We have already learned about this in first also, second also, and in this year also we are going to learn about nouns in detail. Is it okay, children? So what are nouns? Naming words. Nouns are nothing but naming words. जो भी naming words है उनको हम nouns बोलते हैं. So in Hindi we call these nouns as संज्ञा. संज्ञा जिसके बारे में हमने पढ़ा था वही nouns है. So let us see what is there in the chapter. Words that we say or write are divided into different groups, है ना children? So we used to say so many words, isn't it? Now I am teaching you means I am using some words and I am saying something and I am teaching you. In the same way, when we are going to write something, we are using so many different types of words, isn't it? All these words same? Are we using the same type of words, children? No, we are using different type of words, isn't it? हम अलग अलग तरह की words use करते हैं और हर situation में एक ही जैसा वर्ड्स भी यूज़ नहीं करते हैं. व्हाट वी यूज़ टू डू रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द यूसेस, हम हमारा वर्ड्स यूज़ करने की वो चेंज करते हैं, है ना. एक ही जैसा वर्ड, जैसा हमको ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हमने ये 10 वर्ड्स लर्न किया, 100 लर्न किया तो बस हो गया अपनी लैंग्वेज. इट इज़ नॉट लाइक दैट. वी हैव टू लर्न मोर अबाउट द वर्ड्स. दैट्स वाई वट एवर द वर्ड्स वी से और राइट, दीज हैव बीन डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स. अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया. सो लेट अस नो हाउ, किस बेसिस पे इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया. According to the work they do in the sentence. So children, here underline the word according. According means on the basis of this, मतलब इसके अनुसार, कोई एक चीज़ के अनुसार इन सब वर्ड्स को हमने अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है. सो ऑन विच बेसिस, किस बेसिस पे हमने इनको अलग किया कि अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन द सेंटेंस. सो कोई भी सेंटेंस में वर्ड का क्या काम है, कौन सी सेंटेंस आप बोलते टाइम किस वर्ड को यूज़ करते हो और उसकी क्या वर्क रोल है, उसके ऊपर बेस होके हम वर्ड्स को तरह तरह के ग्रुप्स में डिवाइड किया है. सो चिल्ड्रन, डू यू गॉट माई पॉइंट? what it is? We always used to come across so many words, isn't it? अपनी English language में so many words are there, and these words whatever we say or write have been divided into different groups. इनको अलग अलग तरीके में हमने डिवाइड किया. तो अलग अलग कैसे डिवाइड किया आपने, किस बेसिस पे किया? डिपेंडिंग ऑन द वर्क दे डू इन द सेंटेंस. कोई भी सेंटेंस में उसको कहाँ यूज़ करनी है, किसी का पोजीशन बताना है तो स्पेशली हम अलग वर्ड्स यूज़ करेंगे. किसी का नेम बताना है सो हम उधर नाउन्स यूज़ करते हैं. नाउन की जगह हम उसको प्रोनाउन की जैसा यूज़ करना हो तो वो यूज़ करेंगे. एक्शन वर्ड्स यूज़ करना हो तो एक्शन वर्ड यूज़ करेंगे. एक्शन वर्ड की स्पेशलिटी बतानी हो तो हम दूसरा कुछ यूज़ करेंगे. सो डिपेंडिंग ऑन द वर्क दे डू इन द सेंटेंस. सेंटेंस में वो पर्टिकुलर वर्ड की जो यूज़ है उसके बेसिस पे हमने वर्ड्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया. सो लेट अस नो व्हाट दिस टाइप ऑफ ग्रुप्स. These groups are called parts of speech. What are these, children? These groups, इस particular groups को हम क्या बोलेंगे? Parts of speech. A speech means अपनी बोलने की जो प्रोसीजर है. सो पार्ट्स, सो मेनी पार्ट्स आर देयर इन व्हाट वी आर स्पीकिंग. सो हम जो भी सेंटेंस स्पीक करते हैं या कोई भी सेंटेंस रीड किया, राइट किया, इन अ सेंटेंस वी विल कम अक्रॉस सो मेनी वर्ड्स एंड दीज ऑल वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द वर्क दे डू इन द सेंटेंस. एंड दीज पर्टिकुलर ग्रुप्स आर नथिंग बट पार्ट्स ऑफ स्पीच. There are 8 parts of speech. So children, how many parts of speech are there? There are 8 parts of speech. So अगर आप ये हर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस लिखना, पैराग्राफ लिखना, कुछ भी करना बहुत ईजी हो जाएगा. इज इट ओके चिल्ड्रन? सो लेट अस फोकस ऑन दिस. व्हाट आर द 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? फर्स्ट वन इट noun. What it is? Noun. Second it is adjective. Third pronoun. Fourth verb. Fifth adverb. Sixth preposition. Seventh conjunction. Eighth interjection.
Is it okay, children? So these are the 8 parts of speech about which we have to learn. So अपनी English language में जो भी words use करते हैं, they have been divided into groups of which are called parts of speech. And how many types of parts of speech are there? Yes, 8. So 8 में सबसे first parts of speech क्या है अपना? Noun. What it is, children? Noun. So in this chapter we are now going to discuss more in detail about these nouns. ये nouns क्या होते हैं इसके बारे में हम एक बार अच्छा से learn करेंगे. So children, first of all see here there is a picture given here, isn't it? आप अच्छा से एक बार ध्यान से picture देखिएगा. Just observe this picture very carefully. What can we see? Yes, there is a school like our school where it is written school, and students are also there. Hello, I am Rinky. One girl is saying hi, I am Rinky. Then the boy who is there is answering, yeah, hi, I am Rahul. Hello, मैं राहुल हूँ. And we can see a small dog also here sitting here, है ना? We have observed so many things in this picture. So let us see what is given below. Exercise A, fill in the boxes with hints from the above picture. आप above picture को अच्छा से observe करिए and we are going to now fill the blanks which are given below. And from where we are going to take the hints. hints कहाँ से लेंगे हम? From the above picture. जो भी picture ऊपर दिया हुआ है उसी का ही कुछ questions है नीचे. So picture के ऊपर base करके हम इनका answering करेंगे. So let us read the first one. This is the name of a place. So ये फर्स्ट वन का जो आंसर लिखना है वो आपको ये क्या है? ये एक जगह का नाम है. what it is, children? This is the name of a place. So what the place that you can see in this picture? What you are seeing in this picture? Which place can you see? Yes, we can see a school, and school is a place which is also a naming word. So what we are going to write here? School, SCHOOL. Now second one, this is the name of the boy. What it is? ये एक लड़का की नाम है. So ऊपर की पिक्चर में हमें कोई हिंट मिल सकता है क्या? Yes, why can't? Let us see that what the boy is saying. Hey, I am Rahul. So he himself told that he is Rahul and he is a boy. So what will be the name of the boy? Rahul, RHUL. The third one, this is the name of a living thing. एक living thing भी आप इधर देख सकते हो. What it is? A small dog is sitting there, isn't it? So this is the name of a living thing. Yes, dog is also a living thing. Here one boy and girl, they are also a living thing. And other than these, मतलब इनके अलावा भी कुछ लिविंग थिंग्स है. आप अगर अच्छा से पिक्चर ऑब्जर्व किया तो वी कैन सी इन बिहाइंड अ ट्री. देखिए ट्री और बुशेस भी है शायद, है ना? सो ट्री आप देख सकते हो. सो वन ऑफ द दिस इज द नेम ऑफ ए लिविंग थिंग. लिविंग थिंग का नाम है क्या लिखेंगे हम इधर? ट्री. बिकॉज बॉय ऑलरेडी वी हैव रिटन द नेम ऑफ राहुल इन बॉय, एंड गर्ल नेम इज ऑल्सो देयर, एनिमल नेम इज ऑल्सो देयर. सो हियर लिविंग थिंग में हम ट्री लिखेंगे. इज इट ओके चिल्ड्रन? नेक्स्ट, दिस इज द नेम ऑफ द गर्ल. एक गर्ल की नेम है. सो विच गर्ल कैन बी सी इन दिस पिक्चर? यस, दैट इज नथिंग none other than Rinky. So we will write Rinky here because Rinky is the name of a girl. RANKI. This is the name of the animal. We have an animal too in this picture. What it is? Yes, that is dog. So we have written dog here. So children, boy, girl, animal के लिए अलग question है. That's why this is the name of a living thing में हम tree लिखे हैं. Is it okay? So now all the words you have written are nouns. What children? What the words that you have written? Let us revise what they are. School, Rahul, tree, Rinky and dog. What all these are? ये सब होते क्या हैं? ये सब कुछ ना कुछ चीज़ की नाम है. May it be a living thing, may it be a non-living thing, but there are some naming words. So what naming words are called? They are nothing but nouns. So all the words that you have written are nothing but nouns. They are the names of persons. Person कौन होते हैं? Who are persons? People. Thing कोई भी चीज़ का हो सकता है. An animal, it may be an animal, and a place कोई भी जगह का नाम हो सकता है. So children, what do you mean by nouns? Nouns क्या होता है? Names of persons, animals, places and things are called nouns. This is the definition of noun.
ये हम बहुत छोटे से मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही हम ये लाइन सुन रहे हैं, है ना। सो अभी आपको ये समझना है कि व्हाट आर नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं बेटा? सिंपली इट इज़ नेमिंग वर्ड। वो नेम किसका हो सकता है? किसी का भी। नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स। सो दीज आर कॉल्ड नाउन्स। अंडरलाइन दिस। ये बॉक्स में जो डेफिनेशंस देते हैं उनको 1 से 2 बार रिवाइज करिए, उसको 1 से 2 बार गो थ्रू होइए ताकि आपको उसका डेफिनेशन भी याद रहे। ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज ऑल अबाउट नाउन्स। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। Here we have there is one more exercise, that is exercise B. Look at these pictures. Children, आपको ये pictures देखना है and write P for person. If it is a person, what we have to write? P. PL for places. For if it is a place, then we have to write PL. T for things. If it is a thing, you have to write T. For animals, you have to write A in the boxes provided beside the picture. C. We can see a small red color box, isn't it? So we have to write our answer there. First of all, we have to see the picture, which type it is, whether it is a person, place, thing or animal, and we have to write P for persons, PL for places, T for things and A for animals. Okay children, have you read the question? You have to read the question twice to understand and do it easily. Okay, now first of all have a look at the first picture. What it is? Yes, they are birds. What we can see? Two beautiful birds, blue and yellow color birds we can see here. So what they are? Birds come under our animal kingdom. Birds भी animal kingdom में आते हैं. So what we are going to write here? Animals के लिए we have to write capital A. So A is written here. Now see the second pic. What it is? Tiger. So what is a tiger? What it is? It is an animal. So we have to write A. The third one, dress. The dress which we wear, that this is an uniform. This is a uniform. So what we will write here? T. What we will write? T, because dress एक चीज़ है, वो एक thing है. So we are going to write T. Next, ice cream. Our all time favorite है ना, सब kids को पसंद है ice cream. So ice cream is also an eatable item. So it is a thing. So we'll write T there. Then the fifth one, Raman. He is a boy. He's standing over here. So he is a boy means he comes under a person. So we are going to write P. And in sixth, it is park. So what is a park? Park क्या होता है? Garden means it is a place where we used to go. So it will come under place and we are going to write PL, because for place we have given to write PL. And on seventh, we can see our doctor, है ना? So doctor, who she is? She is a doctor means she is a person. So write P. And eighth, we can see a pair of shoes. So shoes, what shoes are? What they are? They are things. So we are going to write T. And now ninth, we can see a library. Children are sitting over there and reading their books very quietly. So library is a place where we used to go. So we are going to write PL for that. And on 10th, she is a teacher. Yes, she is teaching something and she is a person. So we are going to write P here. So कोई भी person हो तो P लिखा हमने. Animals के लिए A, things के लिए T, and for places we have written PL. Children, just turn your page here. Two more examples are there. One is rabbit. Yes, who is rabbit? Rabbit is an animal. So we are going to write it as A. And the other scene, it is beach. Yes, beach में गए हो आप कभी? बहुत अच्छा लगता है बीच में ना, इवनिंग टाइम बीच विजिट करो, कितना अच्छा लगता है. सी शोर, ठंडा ठंडा हवा, बीच है. तो बीच क्या है? दैट इज़ अ प्लेस विच वी विजिट. सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू राइट PL देयर. So children, do both of these exercises A and B in your book. And now let us move to the next exercise, that is C. Circle the nouns in the following sentences. So few sentences are given here and we are going to just circle the nouns. इसमें nouns जो भी है उनको हम circle करेंगे. So first of all children, read the first one. Manya studies in my school. Where is Manya studying? Manya studies in my school. मेरी स्कूल में पढ़ रही है. So what is Manya here? That is the name of a girl which is a noun, and school, it is a place which comes under a noun. So circle these two. Two girls are absent today. So children, in this line, what are the nouns you can see? Two girls. Girls are persons. So we are going to circle girls.
दिस पेन हैज़ नो इंक, इस पेन में इंक बिल्कुल नहीं है. सो पेन इट इज़ अ थिंग एंड इंक इट इज़ अ थिंग विच वी यूज टू refill the pen, isn't it? So pen and ink both are things. Our classroom is very big. सो क्लासरूम दिस इज़ अ प्लेस. स्कूल में एक जगह है, ये एक रूम, जैसा घर पे रूम्स होते हैं वैसा स्कूल में क्लासरूम. सो क्लासरूम इज़ अ नाउन इन दिस सेंटेंस. द tortoise defeated the hare. So who defeated whom? tortoise. जी आपको हेयर एंड tortoise की स्टोरी बहुत अच्छा से पता है. सो here the tortoise defeated the hare. हरा दिया किसने? tortoise ने hair को. So who won the race? tortoise won the race. So tortoise is the name of an animal and hare is the name of another animal. Both of these are nouns. The seventh one, the market is near my house. Where the market is? The market is near my house. So here market, it is a place where we used to go. So it is a noun, and house, which is a place to live and where we live. So it is also the name of a place. Underline these two, circle them. Eighth one, Vivan is a naughty boy. Who? विवान एक बॉय है, बट वो कैसा बॉय है? नॉटी बॉय है. सो ऑब्वियसली बॉय इज ऑल्सो अ नाउन एंड विवान इज ऑल्सो अ नाउन. The boys are playing in the garden. So where the boys are playing? The boys are playing in the garden. So boys name of persons, and garden it is the name of a place, and these two are nouns. So circle these two also. So children, hope all of you understood about nouns. So sentences जब आएंगे हड़बड़ी मत करिए. You have to read the sentence twice, see whether any naming word is there in that, and then circle it. Okay.